Test Prep. I am Ashish Bhargav. I welcome each and everyone here for the daily news analysis. As we know that the important session of newspaper analysis. I hope my voice is clear, I am audible and visible to everyone. So as you know that newspaper is giving a very important role in your examination, right? And it gives you an immense idea कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं. So as per my concern is the newspaper analysis session is very important for those students who are preparing for any exams like we can say CLAT, AILET, SLAT and CUET exam and different competitive exams. So as we know that a newspaper gives you an idea like what kind of things that you need to keep an eye on that, right? Recently there was a controversy about India and Bharat, as we know that how the name has come about the two things that India and Bharat. As we know that Article 1 of the Indian Constitution which clearly says that India, that is Bharat, shall be Union of States. And you will stand to know that India and Bharat, that the term it has been accepted by the Constituent Assembly. And how the things has been emerged at the time of Vedic era, at the time of Rig Vedic time, and because Rig Vedic time there was an ancient tribe name, the name was Bharatas, and earlier it was known as Bharatvarsha. These all things that we will discuss in this awesome newspaper analysis session, and I hope that this will be very clear for each one of you, right? So in newspaper analysis, we discuss about all the important events, like we discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conferences, and miscellaneous. And apart from that, we discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bills, which is very, very important for your exam perspective. So as we know that this is very important. Now here we are in the next slide. Here is the quote of the day that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is, as I told you, कि not each and every fact in the newspaper is important. Sometimes you will see कि आपको बहुत सारे ads मिलेंगे इस पे, तो not each and every fact it is important to know that what is relevant and what is not relevant for your exam perspective. Sometimes students are wasting a couple of hours to read the unwanted and we can say irrelevant news. This is just for your entertainment, but this will not likely to ask in your examination. So you should think about it कि कई बार आपको articles इतने ज़्यादा important नहीं जितना important आप उसे बनाते हो. तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे और बेहद ज़रूरी होंगे. एंड एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चंस ऑफ द डे है, विच मीन्स दैट एट द एंड ऑफ द यूट्यूब सेशन आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय द सेशन एंड यू विल एंजॉय टू सॉल्व दैट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चलो, सो हेडलाइंस ऑफ द डे में आज ज़्यादा नहीं है. द एड आस्त्रा फंड, वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है. सवार्थ, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट advisors launch its maiden and flagship portfolio management service. तो here is the very first article जो अभी recent controversy है गवर्नमेंट की, which is भारत replace India in G20 invite from president. So basically हुआ ये कि यहाँ पे president of India के place पे president of भारत word use किया गया. So the government sources deny plan to formalize only one name for country during a special session of parliament. Opposition says BJP is afraid of India. Ruling party leaders welcome use of Bharat. So the invitation sent by President Draupadi Murmu to the heads of the states and governments and the Chief Minister of Indian states for an official banquet of the occasion of G20 summits in India. So as we know that we, as per the Constitution, as per the Article 1 of the Constitution, which clearly says that India, that is Bharat, shall be Union of State, and it is clearly stated enshrined in our Constitution that India, that is Bharat, is a Union of States. And if you talk about that our ancient past, Bharat is, we can say there was a name of ancient tribe which is mentioned in the Rig Veda. Now we discuss about the important details that how the Bharat, Hindustan
and India was emerged the time of Vedic era and now. So as we know, this source is that have taken from the newspaper article, and this is directly from the Indian Express. India, that is Bharat, a short history of the nation names from the Rig Veda to the Constitution of India. So there is a speculation of an official change in the name of country from India to Bharat, even though Article 1 of the Constitution says India, that is Bharat, shall be Union of States. आपको पता नहीं चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बनाई थी, दैट टाइम देयर वाज एन डिबेट टू यूज द वर्ड इंडिया एंड भारत, राइट. सो उस टाइम में हमने दो ऑफिशियली नाम का एक्सेप्ट किया था. द सम पीपल आर सपोर्टेड द वर्ड इंडिया, some people were not supported to the word Bharat. That's why we have used the word India and Bharat, both the word be used. So why the opposition politician have been posting images of an official invitation where it has clearly mentioned that President of Bharat is instead of usual President of India. So even though there was an Article 1 of the Constitution, there are two names interchangeably. So also several names such as Reserve Bank of India, Indian Railways already have Hindi variants of Bharatiya in them, like Bharatiya Rajaswa Seva, which is called Indian Revenue Service. Bharatiya Reserve Bank, which is already in the Bharatiya word, it had been used. June 2020 में Supreme Court has dismissed a PIL seeking to remove India from the Constitution and retain only Bharat in order to ensure the citizen of this country get over the colonial past, saying India is already called Bharat in the Constitution itself. So being a law-abiding citizen, you should know about that we have adopted by the Constitution that we have two names, India and Bharat. Moving further, if you talk about that, the things is, so where does the name Bharat come from? आपको ये चीज़ समझनी होगी भारत का जो नाम है ये कहाँ से आया. See, as per the story of NCERT, if you go to the National Council for Education Research and Training, जो आपकी old NCERT की बुक है, which is in R.S. Sharma, उसमें आपकी already mention है कि like ancient tribe name that was Bharatas. So Bharatas were the ancient tribe which is mentioned somewhere in the Rig Vedic time, and that's why on that time हमारी जो पुरानी ट्राइब्स थी जिसे हम हिंदी में जनजाति कहते हैं, उन ट्राइब्स के नाम पे हमारे कंट्री का नाम भारत है, right? So Bharatas was the ancient tribe which is mentioned somewhere in the Rig Vedic time, Rig Vedic tribes, and that tribes live somewhere in the Saraswati river, जो प्रेजेंट अभी जो है अफगानिस्तान के पास है. And that tribes initially was known as Bharatvarsh. So in the root of Bharat and Bharatas or Bharatvarsh are tracked back to the Puranic literature and epic Mahabharat. The Purans describe Bharata as a land between the sea in the south and the abode in the snow of the north. जो हमारे पुरान्स हैं उस पुराण के हिसाब से जो मेंशन किया गया वर्ड भारत as the sea in the south and the abode of snow in the north. But social scientist Catherine Clementine Oja explain करते हैं कि भारत as in the sense of religious and socio-cultural entity rather than a political or geographical one. Bharata refers to the sub-regional and subcontinental territory where the Brahminical system of society prevails. आपको पता होनी चाहिए कि पहले के टाइम में ब्राह्मणिकल सोसाइटी डोमिनेंस थी, ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई थी उनको. And that time articles, that is 2014 के articles में लिखा India, that is भारत. So one country, two names, South Asian Multidisciplinary Academic Journal के हिसाब से. बात second clause की अगर हम करें इसमें, तो Bharata is also the name of ancient king of legend who was ancestors of the Rig Vedic tribe of Bharatas, and by extension the progenitor of all people of the subcontinent. It means that Bharatas is also the name of the ancient king of legend who was the ancestors of the Rig Vedic tribe of Bharatas. Writing in January 1927, Jawaharlal Nehru alluded to the fundamental unity of India that has endured from remote past. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जानने की कि इसमें हमारे कंट्री का नाम वाई आर्यावर्त, वाई इंडिया एंड भारतीय वर्ड की ओरिजिन क्यों हुई. बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड नो अबाउट दैट थिंग्स कि ये हमारे नाम क्यों है. आप इस देश में रहते हैं, आपको इस देश के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री के ये दो नाम क्यों हैं, हमारे कंट्री को इंडिया और भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान क्यों नहीं है, मतलब इतने सारे नाम क्यों हैं. And you should know about the things that why we not accepted the word Hindustan, because as per the 42nd Constitution Amendment Act 1976, the word secular was enshrined. तो
तो बच्चे अगर आप ये कहेंगे कि वी आर हिंदुस्तानी वी कैन से, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी ऑफिशियली से एक्सेप्ट नहीं करा, बिकॉज इफ यू से दैट हिंदुस्तानी इट इज वी आर लैंड ऑफ हिंदू ओनली, बट हमारे कंट्री में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं. सो जवाहरलाल नेहरू ने allude किया था फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द इंडिया दैट हैज endured from remote past, unity of a common faith and culture. So सेकंड के हिसाब से भारता जो थे नेम थे एंशियंट किंग ऑफ लीजेंड हु वाज द एंसेस्टर्स ऑफ ऋग्वेदिक ट्राइब ऑफ भारतास. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थिंग्स इज कि यहाँ पे इंडिया वाज भारतास द होली लैंड ऑफ द हिंदूज, एंड इट इज नॉट विदाउट सिग्निफिकेंस दैट द ग्रेट प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज आर सिचुएटेड इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. पहला क्या था? द एक्सट्रीम साउथ ओवरलुकिंग सीलोन, जिसे हम सीलोन जो है बच्चे वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है. Extreme west washed by the Arabian Sea, right? And the east facing of Bay of Bengal and north in the Himalayas. तो चार कॉर्नर्स में सिग्निफिकेंस को दिखाया गया था इसमें. नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट अबाउट इंडिया. वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे कंट्री का दो नाम क्यों है. व्हाट अबाउट इंडिया एंड हिंदुस्तान? द नेम हिंदुस्तान इज थॉट टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम हिंदू, द पर्शियन कॉग्नेट्स फ्रॉम द संस्कृत सिंधु इंडस. देखो इसकी कहानी ऐसे समझो. तो बच्चे जैसे आपका हिंदुस्तान में अगर आपका वर्ड है यहाँ पे सिंधु, सो सिंधु किसको कहते हैं? इंदस रिवर का ही हिंदी में नाम है सिंधु. सो इंदस को हम सिंधु कहते हैं. तो जो हमारे पर्शियंस थे उनके साथ मदर टंग इन्फ्लुएंस था. मदर टंग इन्फ्लुएंस मतलब वर्ड को अलग तरीके से स्पेल करना, उसको हम रीजनल टंग इन्फ्लुएंस भी कहते हैं. सो वो सिंधु को हिंदू यूज़ करना शुरू किया. सो इनिशियली उसको उन्होंने बोला हिंदू, लेटर ऑन इट वाज नोन एज हिंदू. तो वर्ड हिंदू जो था इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? वो पर्शियन कॉग्नेट से हुई, फ्रॉम द संस्कृत सिंधु वर्ड, विच केम इनटू करेंसी विद द Achaemenid Persian conquest of the Indus Valley civilization in the beginning of 6th century BC, which was the time of Buddha in the Gangetic basin. So the Achaemenids used the term to identify the lower Indus basin, and from around the 1st century of the Christian era, the suffix "stan" came to use to name the create Hindustan. तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया हमने 1st सेंचुरी में क्रिश्चियन के टाइम में सफिक्स वर्ड यूज़ करते थे. देखो एक प्रफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है. जैसे पाकिस्तान, तो उस टाइम तान का मतलब होता था किसी नाम को क्रिएट करने के लिए. सो हिंदू एंड उसके बाद में स्टान वर्ड को यूज़ किया गया, दैट बिकेम हिंदुस्तान. सो द ग्रीक हु आर एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हिंद फ्रॉम द आर्किमेंडिस ट्रांसलिटरेटेड द नेम एज द इंदस. बाय द टाइम ऑफ Macedonian king Alexander invaded India 3rd century BC में India had came to be identify the region beyond the Indus. So by the time of early Mughals, अगर मुगल्स की बात करनी चाहिए हमारे कंट्री में थे 16th century में, the name Hindustan was used to describe the entire Indo-Gangetic plains. Historians L. Jan Barrow ने इस आर्टिकल में लिखा हिंदुस्तान टू इंडिया नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स, जर्नल ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री 213 में बताया कि इन द मिड टू लेट 18th century Hindustan often referred to the territory of Mughal Empire, which comprises much of South Asia. So from the late 18th century onwards, British maps increasingly began to the use of name India, and Hindustan started to lose its association with all of South Asia. So part of appeal of the term India may have been its Greco-Roman association, its long history of use of Europe, and its adoption by science and bureaucratic organizations such as Survey of India. Now we should know about the things, how did Bharat word, ये जो word है भारत and India that came into constitution. So the last question कि ये दोनों नाम कहाँ से है? In the monumental discovery of India, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, refer to India, Bharatas and Hindustan. Often as I wandered from meeting to meeting, I spoke to my audience of this India of ours, of Hindustan and Bharatas, the old Sanskrit name derived from the mythical founders of the race. But when the questions of naming India in the constitution arose, Hindustan was dropped and both Bharat and India was retained. So obvious that the Constituent Assembly में debates में name and territory of the Union was taken for the discussion of September 17, 1949. Right from the time the first article was read out as India, that is Bharat shall be Union of States. So a division arose among the members. There were quite a few members who were against the use of name India, which they saw as being a reminder of the colonial past. So all things that we have summarized, that what is the India and Bharata is.
नाउ एक आर्टिकल आपको देखो G20 के समिट्स के बारे में दी हुई है. सो एज यू नो दैट इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया प्रेसिडेंसी विल usher in change for capital to flow to places where it can be best stimulate growth. अब ये देखो G20 की बहुत सारी आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में दिखती रहेंगी, राइट. सो आपको हमें एक बार ये देखो, इसमें नेक्स्ट आर्टिकल में भी आपको G20 है, क्या याद ध्यान रखनी पड़ेगी. G20 व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1999 में, 2008 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 इन द प्लेस वेयर इट इज वाशिंगटन DC में. तो वाशिंगटन DC इज द कैपिटल ऑफ USA. वाशिंगटन DC में, DC का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. एंड इंडिया से पहले, इंडिया के बाद कौन करेगा प्रेसिडेंसी, ब्राज़ील. नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी कौन करेगा, ब्राज़ील. इससे पहले किसने किया था, इंडोनेशिया. सो हमें इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे G20 का स्लोगन है, यहाँ पे वासुदेव कुटुंब और द वर्ल्ड इज वन फैमिली. It means somehow we consider that we are cosmopolitan. So G23 served to illustrate how the concern of the global south have come to occupy center stage. The first principle is the democratization and decentralization of the global economy. One earth, one family, one future. ये जो word use किया हमने, one earth, one family and one future. That should be seen especially in the backdrop of recent geo-economic development that threaten our interconnected futures. So G20 under India presidency and those that follow will aim to fix development and infrastructure finance so that capital can flow to the places where it can be best stimulate growth, benefiting all of us across the world. क्योंकि 80% इकोनॉमी जो हमारी है G20 की है, वो जो हम अभी नेक्स्ट आर्टिकल में देखो, ये भी सेम G20 के बारे में बात करते हैं. सो G20 में कितने कंट्रीज़ हैं, कभी आप ये नहीं कहते ना G20 में 20 कंट्रीज़ हैं. G20 इज अ कंप्राइजेज ऑफ 19 कंट्रीज़, जिसमें आप अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन. तो बच्चे आपका यूरोपियन यूनियन है ये, दैट्स वाई वी हैव 19 कंट्रीज ऑफ G20. So G20 members represent around 85% of global GDP. Over 75% जो हमारा ग्लोबल ट्रेड होता है, about 2/3 of the world population that has to be done by the G20. इसमें शेरपा की बात की गई है. तो the 18th annual G20 heads of the state government summit will take place at the भारत मंडपम. मतलब ये प्रगति मैदान में होने वाला है. इसका नाम गवर्नमेंट ने यूज़ किया है भारत मंडपम. मंडप आपको पता है कि जो हम शुभ काम करते हैं, जैसे हमारी शादी होती है, उसमें मंडप वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट ने यूज़ किया मंडपम. सो मंडप से आया, संस्कृत का वर्ड है मंडपम. सो भारत मंडपम वहाँ पे यूज़ होगी, प्रगति मैदान में होगी. सो सितंबर 9th और 10th को, 9 to 10. सो G20 वर्क्स इन द 3 मेजर ट्रैक्स. 2 of them are official and 1 is unofficial. सो यहाँ पे फाइनेंस ट्रैक headed by the finance minister, and we can say that in short that it is finance minister, central bank governors who usually meet are 4 times a year, with 2 meetings being held on the sidelines of the World Bank and International Monetary Fund. Now we talk about Sherpa. The Sherpa tracks was established after the 4th forum became a leader summit in 2008. It is a metaphor from the mountaineering domain where the Sherpa is supposed to do the heavy lifting and as assist the mountaineer. So this is all about the G20. Different times में articles होंगे यहाँ पे. Here are the talking about India Pakistan की trade की बात हो रही है. My friend, you should know about कि India Pakistan that can set up in the direct trade. So the cessation of the India Pakistan direct trade for a significant period is a result of enduring political tensions and conflict between the two. August 2019 में Pakistan halted trade with India in response to constitutional amendments made in the Jammu and Kashmir region. So India slapped 200% tariff on the Pakistan imports earlier this year when Pakistan's most favored nation MFN designations was removed in the aftermath of Pulwama terrorist incident in 2021 में. ट्रेड विद पाकिस्तान जो कितना था $329.26 बिलियन.
सो यू शुड नो अबाउट द थिंग्स कि ये जो ट्रेड है वो किस हिसाब का ट्रेड है एंड इससे हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है. सो despite sporadic attempts to enhance trade ties such as the creation of the Wagah-Atari border crossing and the implementation of trade pacts like the South Asian Free Trade Area, जिसका नाम दिया उन्होंने SAFTA. SAFTA क्या है my friend? SAFTA is like South Asian Free Trade Area. That advancement have been constrained due to ongoing political discord. So in short, we should think about that India merchandise such as fabric, skincare products, jewelry freely made their way into Pakistan markets, gaining popularity among local consumers. And जो tensions होती दो country के बीच में, that between the neighbors disrupted cross-border trade, leading to a void that was filled by the Indian goods entering through Afghanistan, China and Dubai. So in the past, Indian fabric would enter Pakistan via Chakoti and Rawalkot, while the Samjhauta Express and the Dosti bus facilitated transportation of goods and Delhi to Lahore. So these things you should keep in mind. Dubai has served an alternative route for the trade between India and Pakistan, and the items demanded by India and Pakistan from each other are traded indirectly. So if logistically feasible, jewelry, machinery, medication and chemicals are example of low volume, high volume commodities, businesses can afford to take the longer route, particularly via Dubai, because that is increased cost are passed directly to consumers. So if India-Pakistan trade resumes through the land crossing Atari India, जो हमारा वाघा बॉर्डर है, it can be a win-win situation for both of the country. So क्योंकि indirect trade जो होगा, that like Dubai entails additional intermediaries, increasing transaction cost. Suppose करो इसमें जो intermediary cost है वो ज़्यादा होता है. Suppose ये ज्वेलरी है 5 lakhs की, इसे आप वाघा बॉर्डर के थ्रू दोगे तो अपनी कंट्री से आप दूसरे कंट्री में भेज रहे हो नहीं, बट यहाँ पे अगर आप दुबई के रास्ते भेजते हो यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडिया से दुबई यहाँ पे आपको कॉस्ट देना पड़ता है, फिर दुबई से पाकिस्तान यहाँ कॉस्ट पे करना होता है. तो 5 लाख की ज्वेलरी जो होती है उसकी प्राइस हो जाती है 6 के अराउंड, 7 के अराउंड. सो डायरेक्ट ट्रेड रूट्स दैट वुड which will help cut these costs, making trade efficient and profitable through direct economic engagement. Both countries that can promote people-to-people exchange, cultural interaction and business collaboration, paving the way for improved bilateral ties. Now the next article we talk about, यहाँ पे इस आर्टिकल में है कि आपका प्रेसिडेंट मुर्मू ऑनर्स 75 टीचर्स विथ नेशनल अवार्ड्स ऑन टीचर्स डे. यहाँ पे 50 स्कूल्स टीचर्स थे, 13 टीचर्स फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड 12 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप received a certificate of merit and cash award of 50,000 and a silver medal. So Archana Nagori from Telangana, who works for the improving enrollment rates and reducing dropouts. Mujib Rahman, Dinesh Babu, associate professor हैं यहाँ पे from the Information Technology Indian Institute of Information IIT Bengaluru से, that was awarding. So now we talk about यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे उनको अवार्ड दिया गया, एंड नेशनल टीचर्स अवार्ड की अगर बात करें यहाँ पे, सो द प्राइम मिनिस्टर of India interacted with the winners of National Teachers Award 2023 on the eve of Teachers Day. A National Teachers Award, the purpose of National Teachers Award to celebrate the unique contribution of some of the first finest teachers in the country and honor those teachers who through their commitment have not only improved the quality of education but also enriched the lives of the students. और बात करें इसमें, so the purpose of the National Teachers Award is to celebrate a unique contribution of some finest teacher in the country. So the award as conferred by the President of India 5 September, और award इसमें 50,000 की दी जाती है. जो मैंने बताया कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन की बात करें, हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये 5 सितंबर 1962 से ऑनर्स इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर्स, रिसर्च एंड प्रोफेसर इन इंडिया. जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम, and suggested observing his birthday as the Teachers Day in response of request of celebration about. अभी इसमें आपको ये जानना होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे कंट्री के थे वो क्या थे.
वो हमारे कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 से 62 के बीच में. द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967. Then he was also the ambassador of India to the Soviet Union from 1949 to 1952, and he was the fourth vice chancellor of BHU, which is Banaras Hindu University, from 1939 से 1948 तक. So in 1984 में he was posthumously awarded the Bharat Ratna and Dean of Religions in Contemporary Philosophy, Philosophy of Rabindranath Tagore, The Hindu View of Life, Kalki of Future of Civilization, and Idealist View of Life, The Religion We Need, इंडिया एंड चाइना एंड गौतमा द बुद्धा. ये सारी जो है नोटेबल वर्क्स उनकी बुक थी जो लिखी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे. अगस्त शो PMI शो मोमेंटम. देखो ये जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये जो है आप कभी अप एंड डाउन होती रहती है. इसमें कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो आपको जानने लायक है एग्ज़ाम में. इसमें बस मेंशन कर आपको ये जाननी है कि जो हमारा रिलेशन है नॉर्थ अमेरिकन एंड मिडिल ईस्ट से, उसको कैसे बूस्टअप करनी, वो चीज़ें हैं इसमें. PM फ्लैग थ्रेट्स टू फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो टैक्स हेवंस. इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी दैट कॉल्स फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग इश्यूज रिलेटिंग टू अ क्रिप्टो एसेट्स. इसके बारे में हम दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस न्यूज़पेपर एनालिसिस अबाउट the FSB, which is called Financial Stability Board, that released the synthesis papers. The minister ने ऐड किया इस पे जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है, जिसको कि ई करेंसी भी यूज़ की जाती है, उसमें कैसे क्या क्या थ्रेट्स हैं उसके बारे में. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे. सो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू आउट टू फाइंड इट आउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप एन आई. इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the correct statement regarding the Election Commission of India. The Chief Election Commissioner that can be removed from his office in the same manner and on the same grounds as the Judge of Supreme Court. The Constitution has prescribed the qualification of members of Election Commission. The Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. You can tell about what would be the correct answer. So in short, if you talk about the things is, Election Commissioner B is correct answer of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election process, and the body administered election the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies in India, and the offices of president and vice president in the country, जो कि article 324 में है. This is not concerned with the elections to the panchayat and municipalities in the state, and for this the Constitution of India provides for the separate state elections commission. And the election commissions shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioner if any. So presently जो अगर बात करें, it consists of chief election commissioner that can be removed from his office in the same manner, the same ground as the judge of Supreme Court. The Constitution has not prescribed the qualification, legal, educational, administrative or judicial of the members of election commissions. And the Constitution has not specified the term of the members of the Election Commission, and Constitution has not debarred from the retiring Election Commissioner from any further appointment by the government. ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए. मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑन दैट. विवाद से विश्वास, ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, that sometimes seen in the news is related to what? The first option is pension scheme for the web parties, partial credit guarantees for NBFCs, non-banking financial corporation, direct tax dispute resolution, and enhanced loan availability for exporters. So this one is the option C, direct tax dispute resolution. विवाद से विश्वास जो है 2.0, the scheme has been launched by Department of Expenditure, Ministry of Finance, with the aim of resolving contractual disputes involving the government and government undertakings. And the third question is,
unified payment system UPI has been developed by the Reserve Bank of India, National Informatics Center NIC, National Payment Corporation of India, and Niti Aayog, which is National Institution for Transforming India. So यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NPCI, और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो UPI होती है उसमें आपका होता है QR कोड विच इज़ नोन टू बी अ क्विक रिस्पॉन्स. So unified payment powers multiple banks accounts into a single mobile application of any participating banks, merging several banks features like instant transfer of funds, bill sharing facilities. It has been developed by National Payments Corporation of India. Next, moving to the next one. The correct statement: the near side of the moon always faces away from the earth. The first successful human landing of the moon was on its near side, and the third is the near side of the moon is more heavily cratered compared to the far side. Which one the correct statement is? Obvious, the option A, because the first successful human landing on the moon was a near side in the Sea of Tranquility. Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed the lunar module Eagle on July 20th, 1969. They spent about 2.25 hours exploring the lunar surface before returning to the command module Columbia, and Columbia then made a successful journey back to Earth, splashing down to the Pacific Ocean on July 24, 1969. The near side of the moon is the side that always faces the earth. It is more heavily cratered from the far side, and it has also more Maria or dark plains. और जो far side है moon का, that is never faces the earth, it much less heavily cratered by the near side. And the last question about the moon. So Chandrayaan 3 के concern में आपको ये जानना है कि which of the following statements about the moon is true? The moon has its own light source. The moon's gravity is approximately the same as that of the earth. The moon's surface is completely smooth and featureless. And astronauts have visited the moon multiple times. चंद्रयान 3 के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मून के बारे में कौन सा है स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है. If you look at very carefully, the very first statement is the moon has its own light source is incorrect one. मून का अपना कोई लाइट सोर्स नहीं है. सन की लाइट से उनका मेन सोर्स है. सनलाइट इज द मेन सोर्स. सन इज द मेन सोर्स ऑफ मून. मून्स ग्रेविटी इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज दैट ऑफ अर्थ. नहीं, ये 6 टाइम्स है. मून की ग्रेविटी जो है वो 6 टाइम्स कम है. अगर किसी इंसान की वेट यहाँ पे 60 kg है अर्थ पे, तो उसकी मून पे वेट कितनी होगी? 10 kg पे होगी. मून की, बिकॉज देर इज नो एटमोसफेयर, एंड इफ देर इज नो एटमोसफेयर, W की वैल्यू W इक्वल टू mg, ये आपने देखा होगा, वर्क इक्वल टू mg. mg की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी. तो अगर अर्थ पे किसी इंसान की वेट अगर 60 kg है, तो मून पे उसकी वेट कितनी होगी? 10 kg की होगी. तो मून की जो ग्रेविटी, बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों नहीं? कोई एटमोसफेयर नहीं है वहाँ पे. ठीक है, तो ऑब्वियस दैट सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी. द मून सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ एंड फीचरलेस. नहीं जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा. सी ऑप्शन आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पे मून का सरफेस है, वहाँ पे आपका माउंटेन भी है, लेक्स भी हैं, तो कंप्लीटली स्मूथ एंड फीचरलेस नहीं है. थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव विजिटेड द मून मल्टीपल टाइम्स. यस, ऑब्वियस एस्ट्रोनॉट ने बहुत बारी, ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स इसको विजिट कर चुके हैं. तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मून. अब इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. तो द करेक्ट स्टेटमेंट डी, astronauts have visited the moon multiple times. The first successful human landing on the moon was 1969. And there have been total of 12 people who have walked on the moon. Other statements are not true. Moon does not have its own light source. It reflects sunlight, which is why we see it in the night sky. Moon's की gravity 1/6 होती है, जो हमने डिस्कस किए अभी, that of the earth. This means that if you weight about 1/6 of your weight on the moon. And the moon's surface is not completely smooth and featureless. It is covered by craters, mountains, and valleys. So that's why that statement was correct. So I hope, my friend, this is an important session.
एंड मेक श्योर इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड if you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. Please share this video to your friends and family group because they should aware about what is happening around us. So don't think about newspaper is only important for the students. It's important for each and everyone. Because हम सबको जानने का अधिकार है कि हमारे कंट्री में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें वर्ल्ड वाइड चल रही हैं. So I hope you enjoyed the session a lot. If you have any question, please let me know. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well. And do not forget to press the bell icon. And we'll meet you tomorrow for the same time. Till then, अपना ख्याल रखें and stay tuned. Bye bye and take care.